Bonjour les élèves, vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire leçon de Jeanne d'Arc. Êtes-vous prête? Oui? Allons-y. Understood what I have said? Okay, so I am repeating in English also. I said, good morning, students. How are you? Okay, you all are good. Today we are going to do lesson number 2, Jeanne d'Arc. Are you all ready? Oui? Yes? Let's go. Okay, so children, in this chapter we are learning lots of grammar portion, okay, activities, and many exercises are there. Okay, I think around 12, 13, 14, 16 questions are there. So we are going to do I have divided this lesson in 3 parts. Okay, today we are only focusing on this comprehensive and the vocabulary portion. Next class I'll tell you the grammar portion, and the final class, okay, we are having the Zoom class, children. Okay, very important, on 18th, okay, sorry, on 19th. Okay, on 19th we are having the Zoom class. And in the Zoom class, children, what we have to do, first I'll upload the video, okay, and in the Zoom meeting we will discuss the difficulties. Fine, so you have to attend it. So today we are going to do this passage. What I have done, children, I have already made the vocabulary worksheet, okay, related to this. I'll show you. And there are many vocabulary worth 34 are there, like this I have made. Okay, and I have shared this page along with the PDF file of this chapter and the exercises. Okay, already I have shared in the WhatsApp group, so kindly go through it before proceeding the video. Okay, so today I am focusing on the passage. I am reading the whole passage and then I'll quickly tell you the summary, what is all about. I am not translating word to word line, okay, because with the help of this vocabulary, okay, you can easily do that, and then we'll do the question answers related to the passage. Okay, so quickly we will do this. Okay, so are you ready? I'm going to read Jeanne d'Arc. As you see here, some pictures have given. Okay, Musée Jeanne d'Arc, okay, then the statue, La Tour Jeanne d'Arc. Now, who is Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, who? It is all about her only. Okay, so I'm starting. Connaissez-vous Jeanne d'Arc? C'est une grande héroïne de l'histoire de France. Cette jeune fille de 16 ans habite avec ses parents très pieux dans le village de Dormery en Lorraine. Son père est fermier et il a des moutons. Jeanne aide sa mère et elle garde aussi des moutons. Un jour, elle est dans le champ avec des moutons. Elle entend une voix mystérieuse. La voix dit Jeanne, Jeanne, allez sauver la France des ennemis. Elle a peur. Elle entend la même voix tous les jours. Alors, elle va chez le roi Charles VII. Elle demande au roi pour une armée. Le roi donne une armée et met Jeanne à la tête. Elle conduit l'armée contre l'ennemi. Elle gagne une victoire importante à Orel. Puis, elle gagne beaucoup de victoires et enfin, Charles devient le roi de France. Jeanne est content, mais le roi Charles s'amuse et ne fait pas la guerre. Bientôt, l'ennemi attaque, arrête et prend prisonnier Jeanne à Rouen. Il déclare que Jeanne est une sorcière et brûle Jeanne sur un bûcher. Maintenant à Rouen, on trouve une statue de Jeanne d'Arc et une belle église à l'endroit du bûcher. Les Français n'oublient pas la grande héroïne de France et elle
est le symbole éternel du courage, du patriotisme et du dévouement. Okay, so this is the whole text, children. Now what I am going to do is I am repeating the text, okay, with the translation, and just focus it. Now, what is this? Connaissez vous Jeanne d'Arc? Do you know Jeanne d'Arc? Do you know who is Jeanne d'Arc? Okay, this is a great heroine of the history of France. Okay, this lady, this young girl of 16 years old, okay, lives with her parents and very pious. Priya means pious. Pious is भगवान में आस्था रखने वाले लोग जो होते हैं. ओके, très pious dans le village, in the village of Doreme en Lorraine. This is the name of the village. Okay, her father is a farmer. Okay, and he has sheeps. Mouton is sheeps. Okay, and she helps her mother, and she also keeps or guard the sheeps. Okay, one day in the Shomp. What is Shomp? In the field. Okay, in the field. One day in the field, she was there in the field with sheep, and she heard some mysterious voice. Okay, why is voice and mysterious is mysterious voice. Okay, and the voice came, Jean, Jean, allez sauver la France, the enemy. Jean, Jean, come save the France from enemies. Okay, she was scared. Elle a peur. She was scared, and she hear that voice every day. Then, so what she does, what she did, she went to the Rua. What is Rua? To the king. Rua is the king Charles 7th. Okay, उस टाइम पे जो king थे उनका नाम था Charles 7th. Okay, and she demand the army. Okay, उसने क्या मांगा? आर्मी मांगी. The king has given the permission. Okay, he has given the army, and जीन को उन्होंने head बना दिया. Okay, पूरी आर्मी का head बना दिया. Then El Khondeila army, उसने क्या किया? आगे जाके कंडक्ट की, पूरी आर्मी लेके गई, एंड उसने अगेंस्ट एनिमीज़ के अगेंस्ट बहुत सारी विक्ट्रीज उसे मिली. ओके, एल गाइन यून विक्ट्रार एम्पोतो ओरियल के खिलाफ उसको एक बहुत ही शानदार विक्ट्री मिली. ओके, शिवान गायन में शिवान. Now then Elle gained beaucoup de victories, and she has achieved many victories. Okay, बहुत सारी victories उसको मिली, and Charles जो है वापस से राजा बन गया फ्रांस का. Now Jane A. Quanton, she was very happy. Okay, but the Charles, okay, he was like enjoying with himself only, and she forget Jean. He forget Jean, and वो कहाँ पे वॉर में भी नहीं गया. उसके बाद क्या हुआ? सून जो एनिमीज़ थे, द एनिमीज़ दे अटैक्ड, अरेस्ट, एंड जीन को उन्होंने क्या किया? प्रिजन में डाल दिया. ओके, जेल हो गई उन्हें. देन रूए की ये बात है, एंड दे डिक्लेयर दैट जीन ए यून सोर्सियर. व्हाट इज सोर्सियर चिल्ड्रन? कैन यू गेस? विच. ओके, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट वो विच है, और उसे क्या किया गया? बर्न कर दिया गया. उसे वहीं पे बर्न कर दिया गया ऑन अ बुशे. बुशे इज फायर. ओके, नाउ रूए जो है वो प्लेस है. ओके, फ्रांस में. वी कैन फाइंड वन स्टैचू ऑफ जीन द आर्क. ओके, एंड वन ब्यूटिफुल चर्च. ओके, एट द प्लेस जहाँ पे उन्हें जलाया गया था, बूशे. ओके, and les Français n'oublient pas la grande héroïne. The French people does not forget. French people do not forget the great heroine. Okay, and वो क्या सिंबल करती है? Eternal du courage, patriotism and devotement. Courage, patriotism and devotement is devotion. Okay, so it is all about this lady. So what you have to do? First question, répondez aux questions.
Qui est une grande héroïne de l'histoire de France? Où habite-t-elle? Who is the great heroine of the history of France? Very easy. ये दो questions आप notebook में करेंगे. Okay. You can find here. यहाँ से आप लिख सकते हैं इसका आंसर. Okay. And after that, where she lives, ये आप बता सकते हैं. What was the name of her village? Dorée-en-Lorraine. Okay. Then qui trouve en Rouen? What we find in Rouen? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Rouen on trouve une statue de Jeanne d'Arc et une belle église à endroit du boucher. Okay, यहाँ तक हम लिख सकते हैं. Now question number 2, choisir la bonne réponse. You have to choose these two options I have given. You have to choose any one. Okay, so number 1, ये हमें देखना है टेक्स्ट से रिलेट करते हुए. So Jeanne d'Arc habite dans le village d'Orée. Yes. Avec sa grand-parent? Non. Avec sa parent. Okay. Elle attend une voix inconnue or une voix mysterious? Mysterious. Okay. Inconnu means unknown. Jeanne gagne une victoire à Paris d'Orée. Aurélie. Sorry. Cut. Okay. À Rouen on trouve, in Rouen we find a palace de Jeanne d'Arc, une statue de Jeanne d'Arc, une statue. Okay. Complétez avec un mot des mots du texte. You have to find out from the text and then उसको relate करते हुए आपको भरना है. Nous prions tous les jours. Nous sommes très fatigués or pieux. Prions means pray. We pray every day. We are very pious. So it will be pieux. Okay, pious. Okay. Ma sœur dash les chiens. अब एम तो कहीं आया नहीं है, अपर आया है. ओके, सो माई सिस्टर हैज़ अ फियर ऑफ डॉग्स. अपर. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट, मेथ सेट ताब्ल डैश लेट म्यूर. ऑंत्र भी नहीं आया है, सो आंसर इज कॉन्त्र. पुट द टेबल अगेंस्ट द वॉल. मा मेजों ए द dash come. My house is in the field. Field आएगा या place आएगा? My house is in a shop. है ना, तो एंड्रॉयड के साथ हम लिख सकते हैं क्या? काम प्लेस और काम फील्ड क्या आएगा? Place will come. Endroit. Okay, place. Next one. Trouver le contraire. Find out the opposite. D'abord. D'abord it at first. First, so answer will be enfin at last. मैं content is unhappy, so answer will be content. Plutarch is later, so later का दमा नहीं होगा, maintenance होगा. It comes here. Okay. एंड पेड़ का होता है थ्रूव. पेड़ मीन्स लॉस, लूज. ओके, सो इट इज फाइंड. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस. दीज फर्स्ट टू क्वेश्चंस you will do in your worksheet. So in the next class we will proceed to the grammar portion. Children, till now finish this work and read the text once again. Try to understand each and every word. Please learn the vocabulary words. Okay, so it will be easy for you to understand the whole passage. So that's it for today. Awa, if you will find any difficulty you can text me. Fine. So awa, abhiyanto.